My name is Rambo, John Rambo, Silver Stallion, Cockroach Killer. और मैम डोंट नो कि ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। ये बड़े बड़े जो इनके जो monkey, snakes, tigers, lions, and gendas. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पॉडकास्ट आपका है लेकिन होस्ट मैं कर रहा हूँ। कोई मसला नहीं है। क्या डायनामिक्स है ये? डायनामिक्स बस हैविंग अ कन्वर्सेशन और तारुफ कराएं अपना। तारुफ गाजी आबिद, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गाजी आबिद। व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम गाजी आबिद है, ऑल्दो आई हेट गोइंग बाय दैट नेम, आई प्रेफर मोहम्मद गाजी। ठीक है, और तो हम आपको फिर गाजी आबिद कहेंगे। ठीक है। This reminds me of a clip I saw today, शुएब अख्तर की। वो निदा यासिर को of F1 fame asks her a question saying कि जो पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीता था किस साल में जीता था, and she's confused and she says let me consult my smarter friend. And he asks again कि अच्छा फिर ये बता दें 2009 का वर्ल्ड कप किस साल में जीते थे, and she says 1992 में। So I've seen that clip. I think it's a इसका क्या ताल्लुक है यार जो बात हो रही है? मैं बताता हूँ। इसका ताल्लुक ये है कि मैंने उससे पूछा कि it was a work. It was, she knew what she was doing. It reminds me, Naomi Osaka. She asked her opponent, should I call you Jenny or Jennifer? वो कहती है call me Jenny. वो कहती है okay Jennifer. ये आप अपना तारफ शुक्ला दें, ये एक स्क्वीकी सी आवाज बीच में आ गई है। तीसरी आवाज I go by the name Loverboy 68. ठीक है, also known Almost as made it. One unit less than One unit less a than little that. sexually provocative. Almost there. और मेरा नाम उसामा है। Usama Wahid from the Wahid Khan. No @hotmail.com, no मोहम्मद गाजी और गाजी आबिद इश्यूज। तो आपको कोई ईमेल करना लिखता है तो वो बस उसामा लिखता है और पहुंच जाती है। बिल्कुल Direct. गूगल में लिखो उसामा तो पहला रिजल्ट ही में होगा। हाँ बिल्कुल। I hope that was the case. As long as you spell it with a U and not Exit an O। control list पे ओ के साथ नहीं होना चाहिए। अच्छा Osama. मिस्टर गाजी जी, मेरे सुनने में आया है कि आपको रेसलिंग बड़ी पसंद है। मुझे बहुत पसंद है। It's अच्छा। one of my favorite things to watch. और आपकी तरह जो हमारा दूसरा गेस्ट है साद, इसको मैं ये नहीं कहूँगा रेसलिंग पसंद है, लेकिन वीडियोस मुझे बड़ी भेजते हैं रेसलिंग की, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे। तो आपकी रेसलिंग से क्या मोहब्बत असल में आपका जो सैंपल है ना वो खराब। आप सोचे अभी आपको भेजता वो तो देखता कितना हो। वैसे देखते तो हम बचपन में ही थे रेसलिंग, लेकिन आप सिर्फ वीडियोस तक महदूद होगी क्योंकि अटेंशन स्पैन ही इतना चेंज हो गया इन द एज ऑफ टिकटॉक। वेल टू बी फेयर, मेरा रेसलिंग का हमेशा ये ओपिनियन था कि इट इज़ अबाउट द स्टोरी एंड द एक्चुअल फाइटिंग इज जस्ट समथिंग यू कैन स्किप ओवर एंड गेट टू द रिजल्ट ऑफ द मैच। I am guessing your experience has been different. It has been. मुझे लगता है कि आपकी रेसलिंग के साथ जो थोड़ी सी फैसिनेशन है वो काफी डिफरेंट है फ्रॉम माइन। आपकी क्या फैसिनेशन है? मेरी तो आई लुक एट द एंटायर स्टोरी, द कैरेक्टर्स, द मैच इटसेल्फ। अगर आधे घंटे का मैच चल रहा है तो मैं वो देखूंगा और मैं देखूंगा कैरेक्टर्स किस तरह ओवर टाइम प्रोग्रेस करें। बट आई थिंक ही इज इन इट फॉर द मीम्स। जो ग्रेट खाली he's into the more worked aspects of wrestling जो बहुत ज़्यादा stand out और इसकी मैं वजह बताता हूँ। जो रेसलिंग का मैच इटसेल्फ है, all matches are identical. टैग टीम मैच में हमेशा एक ही चीज़ होती है, the good guys are beaten up. One of the good guys is being beaten continuously. Evil team जो है वो कुट रही होती है उन्हें। Eventually the other good guy gets tagged in और वो आता है और जो स्टेज पे है उसको मारता है, जो नहीं है उसको भी मारता है, और बस फिर कुछ क्लाइमैक्स में कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन सब मैच का जो ओवरऑल फ्रेमवर्क वही है। सो आई फाइंड द मैच इटसेल्फ, लाइक यू सेड, इज नॉट एज इंटरेस्टिंग एज द स्टोरी एंड द मीम्स अराउंड इट। लेकिन ये इम्प्लाई करता है, और शायद आपके लिए बड़ा हर्टफुल सवाल हो, कि रेसलिंग फेक है। Is it fake? कत्ल कर दूंगा मैं तुझे इस बात पे। Whenever someone says that wrestling is fake, I cringe at that because obviously, but we don't use that word.
So can you elaborate what is the fake मतलब part हम and the real जब part? टाइटैनिक देख के निकले थे तो हमने ये तो नहीं कहा था कि ओ यार ये तो कितनी फेक थी, और जब थैनोस ने आधी पॉपुलेशन वाइप आउट कर दी थी तो हम सब ये तो नहीं कह रहे थे कि यार ओ यार ये कितनी फेक थी. It's all scripted, it's entertainment, and what he said, that's called a hot tag by the way. अच्छा. और उसका पर्पस ही होता है. मार्वल फिल्म्स में भी ये हो रहा था कि यार अच्छा सबको कुट पड़ी है, एकदम से कैप्टन अमेरिका आया विद द हॉट टैग, उसने म्योलनीर उठाया और वो पागल हो गया. तो वो तो एक एंटिसिपेशन है कि हाँ यार अब आना है, किसी ने कुटना है. तो आई थिंक फेक कहना शायद इसलिए हमें अच्छा लगता है क्योंकि वी अपीयर आवरसेल्व्स टू बी अबव दैट बाय कॉलिंग इट फेक. आई थिंक दैट्स हाउ सर्टेन पीपल व्यू इट कि नहीं अब हम बड़े हो गए हैं, अब तो फेक है. बट इट्स लाइक एवरी अदर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, इट्स स्क्रिप्टेड. मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बताता हूँ. जब हम बचपन में बहुत रेस्टोरेंट देखते थे, फिर एट सम डे मेरे माँ बाप ने बताया ये बेटा फेक होती है, पर मुझे यकीन नहीं आया. फॉर मी दैट वाज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. माई लाइफ वाज अ लाई. दे माइट एज वेल हैव सेड कि आप अडॉप्टेड हैं. आई वुड हैव फेल्ट द सेम वे. ये तो मतलब सांता क्लॉज वाला किस्सा हो गया फॉर देसी. बिग रेवलेशन. बट उसके बाद मतलब आई लाइक ही सेड, आई मीन इट मेक्स सेंस दैट इट्स आई होप इट्स फेक. इट वुड बी अ लॉट वर्स इफ इट वाजंट फेक. लेकिन मुझे ये बताओ कि what aspects are not fake? Surely you can't fake diving from 20 feet in the sky onto a stage. ये तो अच्छी बात आपने पूछी है क्योंकि if you look at generally movie stars or action stars, they have stuntmen. They come in front of the camera, they have harnesses, they have CGI, they're not really doing their own stunts unless you're talking about someone like Akshay Kumar, maybe Zahir hai ki pyar hai tera chumma. Dun, 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 dun. So the thing with wrestlers is that they have to do the acting, they have to do the stunts themselves, and that is all real. The punishment that they go through in the ring is very real. If they're falling off a 30-foot ladder or a steel cage, that's actually real. They're not using any magic for that or something else. But they are using some like for example, I've always thought कि मैट जो है वो थोड़ा सा पैडेड है या सॉफ्ट है. नहीं तो मार दे उनको सीधा कंक्रीट में सर मार दे, कुछ तो होना चाहिए. उन्होंने अगले दिन नहीं परफॉर्म. वैसे आई मीन मेरे लिए सबसे वियर्ड था वो जब ट्रिपल एच स्लेज हैमर मारता है दूसरे के साथ. वो मतलब आई मीन इवन इफ यू आर फेकिंग इट लाइक इट हैज टू बी वेरी क्लोज. वो यहाँ से पकड़ता था ना, जहाँ से मर्जी पकड़े यार. हम ऑडियंस को रिमाइंड कराएं कि ये पॉडकास्ट है ऑडियो ओनली, सो गाजी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि स्लेज हैमर कहाँ से पकड़ता था, लेकिन जो सुन रहे हैं उनको कोई आइडिया नहीं. हैमर का जो हिस्सा है जो लगना चाहिए उस पे उसका हाथ होता था और वो हाथ असल में ट्रैवल करता था. द हैमर यूज्ड टू बी इन प्लेस, सो द इम्पैक्ट वाज थ्रू द हैंड एंड इट अपीयर्ड लाइक he was hitting you with a I guess मेरी line of questioning है कि I am asking magicians to reveal their secrets. So एक as you said कि he's covering the top of the sledgehammer. एक मैंने note किया कि to create the sound of impact वो अपना पाँव ज़मीन पे मारते हैं. और एक है कि I've heard and you can correct me if I'm wrong कि they have like blood packets or like pins or razors that they cut themselves with to indicate blood. तो इस तरह की और insider secrets क्या हैं on selling it as real? I mean that's mostly it. They do make an impact जब आप लैंड करते हैं when you're taking a bump basically. तो आपने अपने हाथ मैट के साथ ऐसे फेंकने होते हैं, लगाने होते हैं ताकि आवाज आए. और जब जेफ के साथ भी करना होता है, सिर्फ मैट के साथ. जेफ के साथ भी कर लें, मैट के साथ भी कर लें, डीवॉन के साथ भी कर लें, ठीक है, बबा रे के साथ भी कर लें और एज और क्रिश्चियन के साथ भी. ठीक है. और फिर एक और चीज ये होगी कि जिस तरह इफ यू आर किकिंग समवन यू स्लैप योर थाई एंड दैट गेट्स पिक्ड अप बाय द कैमरास, द माइक, तो वो असल में लगता है कि किसी को लगी है. तो अगर आप कभी स्लो डाउन करके देखें तो यू विल ऑफन सी पीपल स्मैकिंग देयर थाई. तो बाद में पता नहीं उनके वो लाल हो जाते हैं टांगे आफ्टर दैट. सर गाजी मुझे ये बताएं, एक मैंने सीन देखा था उसमें मिक फॉली वर्सेस रैंडी ऑर्टन हो रहा था और वो बकायदा हजारों थम टैग्स होते हैं स्टेज पे और मिक फॉली जस्ट स्लैम्स रैंडी ऑर्टन ऑन टॉप ऑफ इट, या रैंडी ऑर्टन उसको आरकेओ मारता है वहां पे और उसकी कमर is full of thumbtacks. That was a horrific to look at. So I'm just imagining how he must feel. And how do you fake something like that? What's the theory? That isn't fake. अच्छा.
I mean, some of the thumbtacks might be gamed, but that isn't fake. ECW, hardcore wrestling, ट्यूब लाइट से लोगों के सर पे मारना, स्टेपल करना, that wasn't fake. मुझे बताएं, बचपन में एक रेसलर होता था रिकीशी, उसकी एक मूव होती थी स्टिंक फेस. So for the benefit of the audience, can you describe that move and also explain whether that is fake or not? It was very real. We were talking about a guy who was Hawaiian, who was very well endowed in the backside. Used to wear like this weird black leathery thong type thing, and it was a humiliating move कि वो आपको corner में गिराता था नीचे, और जो bottom turnbuckle, जो mid turnbuckle होता है, उसमें वो आके आपको अपनी जो पिछवाड़ा है वो आपके मुंह में घुसाता था, and then he used to wriggle it around your face, and it was called a stink face, because usually the logic is कि you know, अगर इस किस्म का बंदा है तो वो स्मेली भी होगा, obviously. That's at least what Vince logic says. I guess receiving end वालों के contract में bonus होता होगा to be on the. मेरा नहीं ख्याल कोई bonus होता. But I want to talk about the fact कि how things that wrestling has been doing जब से हम देख रहे थे, how so many other entertainment avenues, people, politicians have borrowed those things. And nobody calls that fake, even though it is as scripted and fake as wrestling is. But wrestling always gets a very bad rap for it. You mentioned Marvel as a starting point. That movies are fake, TV shows are fake, and I know that wrestling, they usually market it as seasons and episodes. They might not call it that, but that is the implication. So in a way, it is reality TV, if you will. Gordon Ramsay comes to mind. So. और कौन सी इंडस्ट्रीज हैं इन योर? और आपने जो अभी एक मीम शेयर की थी हमारे साथ, लवर बॉय 68_68 सॉरी जस्ट 68 बीबी गवर्नमेंट वाली, वो अगर आप शेयर कर दें हमारे जी, जो लोग नहीं वाकिफ, बीबी गवर्नमेंट एक एक्सेंट से अंदाज़ा है कि ये कराची या हैदराबाद में होगी. वो टीवी रिपोर्टर जिस तरह वो प्रोवोकेटिव सी इंटरव्यूइंग लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग करता है, उसको पता नहीं क्वेश्चन क्या पूछा था ऑनेस्टली, लेकिन इट स्टार्ट्स बाय ये बिक गई है गवर्नमेंट, और फिर शी प्रोसीड्स टू यूज सम वेरी क्रूड लैंग्वेज टू डिस्क्राइब. तो अब ये भी फेक है या नहीं फेक, इसका जवाब शायद सर गाजी हमें बेहतर दे सकें. So for someone who calls himself 68, आप crude language से बड़ा refrain कर रहे हैं. Why not reenact that meme? 68 is my date of birth. Sorry, it's a funny coincidence कि वो ऐसा साल है, लेकिन अब क्या करें, अपनी पैदाइश तो नहीं कोई कंट्रोल कर सकता ना. ठीक है, नहीं कर सकता. आपकी humiliating move से मुझे याद आया, एक रेसलर था जी, बिग डैडी 5 या बिग डैडी वी विसेरा, आप छोड़ दे रिकीशी, उसकी ह्यूमिलिएटिंग मूव होती थी, वो आपको उल्टा लिटाता था स्टेज पे, और फिर आपको इन अ हम्पिंग मोशन आपके ऊपर जंप करता था. एंड ही इज अ बिग डूड, वन ऑफ द बिगेस्ट रेसलर्स देयर इज. आई कांट इमेजिन रिकीशी स्टिंक फेस बीइंग वर्स देन दैट. That has some other issues with it, I feel. But speaking of which, I've noticed over the years, is wrestling becoming more politically correct? I think so. It definitely has. Pehle women were objectified a lot in wrestling. Now they're taking women wrestling more seriously. Gone are the days of bra and panties matches and clothes on a pole match. अब असल अच्छी wrestling होती है, औरतों को टाइम दिया जाता है, unlike AEW जहाँ पे शायद one could argue कि women wrestling इतनी अच्छी नहीं होती, but WWE में specifically there is a change, and I think a lot of it has to do with the old guard now stepping down, because if you're all aware of Vince McMahon, he was a pretty shady person, incest storylines, and just generally being a ladies' man, and also having a lot of no chance. So अब वो खैर चला गया, he's not head of creative anymore, so we see more better Triple H storylines. हाँ, now Triple H is head of creative WWE. तो मेरे ख्याल से that has been the case. Do you think it's better? What are the
what would now be considered the worst politically incorrect moments? I remember एक कोई पाकिस्तानी related भी Triple H का था. I forget the exact promo, but being racist on the streets of New York or something. Something like that. Maybe some casual racism thrown in. Something that recently happened was when Jinder Mahal was champion WWE. This was not a very long time ago. So he was in a program with Shinsuke Nakamura, whose English is not very good. He's a Japanese wrestler. तो वो स्टेज पे आके उसका मजाक उड़ा रहा था कि रुक my English is not very good. So I think that was very politically incorrect and people called them out on it. But since he was a heel, he was a bad guy, so you kind of understood why he was doing that. It wouldn't make sense for a good guy to do that on stage. तो वो एक तरह से वो justify हो जाती है चीज़ थोड़ी बहुत. Right. अच्छा आप ये बार-बार terms इस्तेमाल कर रहे हैं, heel, work. ज़रा explain करें ये wrestling terms. देखिए हील एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक बुरा कैरेक्टर है, एक एंटागनिस्ट है एक तरह से, evil person who needs to be defeated. The baby face or the face is the good person, and work is you showing the audience that what you're doing is actually real, so selling them on the storyline that you're presenting. So if there is a wrestler who comes to the match with a brace in his neck, he's working the audience. He's not actually injured, but in storyline, he is injured. But shooting is when you open the curtains a little more, and then the reality seeps in. Backstage जो चीजें होती हैं वो seep in करती हैं. That is what shooting is like. जब आप असल में चीजें बता रहे होते हैं, this is what it's real. So for जो बीबी गवर्नमेंट थी, वो कहती है ना कि ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, तो वो यही कह रही है कि they're all working us. और जो आपने भी बात की वो शोएब अख्तर वाली, मेरा तो मानना ये है कि she knew that she will get views when she does this, and she knew कि 1992 में ही जीते. She was just working the audience, right? Selling them on her idiocy. अच्छा, इसके रिकॉर्डिंग से पहले आप इसको पॉलिटिक्स से लिंक करना चाह रहे थे, ये क्या साइंस है? आप कैसे लिंक कर सकते हैं इसको? पहले लेट मी सी व्हाट यू हैव टू से अबाउट, कैन यू लिंक इट टू पॉलिटिक्स? जी, पाकिस्तान पॉलिटिक्स तो हो सकती है. और इफ यू थिंक अबाउट, लेट्स टेक रेसलिंग ऑन फेस वैल्यू. अगर आपने फेस वैल्यू कैरेक्टर्स को मैप अगर करना हो, आई मीन अ सर्टेन इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री दैट वेयर्स यूनिफॉर्म might be like a special referee who calls the shots, or it could be even Vince McMahon, the genius behind the scenes, who's maneuvering everything without the audience really realizing it. उनको लग रहा है ये सारे अंडरटेकर और केन भाई लड़े और बीच में, लेकिन ये सारा कुछ विंस मैकमैन ने प्लान किया हुआ. No chance. I guess the other thing that comes to mind for me is that the same character can turn heel or baby face, and people forget कि एक ज़माने में bad guy था या good guy था. तो your political leaders are sometimes the best thing that's ever happened, or you need to go, we've had enough of you, even though they are essentially the same person throughout those years. You are spot on. I mean, I compare Imran Khan to John Cena. जब John Cena नया आया था WWE में, people were crazy about him. ये रैप करता था, thug doctor, thugonomics, बड़ा cool gimmick था. He brought something new, ruthless aggression. फिर जाके जब WWE ने उसको सब कुछ दे दिया, and he kept on just appearing on television everywhere, इतना कुछ हो गया हुआ था that a large section of the audience went against him. Like, we don't want to see this guy. And I think another very important parallel with politics is that कभी अगर आप promos देखें जो अक्सर औकात पेपर व्यू से पहले होते हैं, तो promos का मकसद ये होता है, आपको मेरा ख्याल है थोड़ा explain करना पड़ेगा promos और पेपर व्यू. So होता है कि it's an episodic weekly television show which has live events on the weekends, and these are special events जहाँ पे अक्सर titles को challenge किया जाता है.
और उसमें गिमिक मैचेस होते हैं, जिस एलिमिनेशन चेंबर है, रॉयल रंबल, हेल इन अ सेल, विद द बिगेस्ट वन बीइंग रेसलमेनिया. So let's assume that Loverboy 68, I keep forgetting your name. Loverboy 68 और मेरा अगर मैच हो रहा है, मैं हील हूँ और ये फेस है, और मैच अभी आज क्या है, थर्सडे है ना, तो सैटरडे को मैच है. So the point is to get people invested in the match, and we do that through a promo. So he'll cut a promo on me, I'll cut a promo on him, he'll make fun of me. कोई example देना. Example. Rock and Austin, for example. ठीक है, so The Rock is one of the best people on the mic. Steve Austin was as well. Generally, what you do is you don't want to completely annihilate the person verbally, because then you lose credibility for them. अब ये नहीं उसको आके कह सकते कि तू तो 10 दिन से कुछ जीता ही नहीं है, तू तो फारिग है, तुझे तो आती नहीं है रेसलिंग, तू तो इतने मैचेस हारा है, because that takes the interest away from the match, because you're not putting the opponent over. So sometimes what heels will do is that they'll put the opponent over in a way कि हाँ ठीक है, I recognize that you're a challenger, I recognize that this is what you're doing, but at the end of the day I'm going to walk out with this title. And then you take cheap shots as well. इस तरह अभी पॉल हेमन ने एक चीप शॉट ली थी, जो कोडी रोड्स चैलेंजर है, उसको उसने कहा था कि कोडी रोड्स, while you're out there defending your title on the road, your wife is going to be at home. And then he's like, no, I don't mean Roman Reigns, because he's a happily married man, but I'm not. So things like this, which normal people will not associate with, and they will want to see Paul Heyman get punched in the face. I just want to tell the audience that you're saying this is recent. Yeah, this happened. I will say that our class 8-9 के math teacher did this first. The same dialogue. The context being that there was a parent-teacher meeting on campus. And do you want to finish the story? Because I think we get the idea. So he will refer to your parent of the feminine gender and do a piece on them. Yes, so essentially he asked the student कि आपके parents आ रहे हैं parent teacher conference में, and the student said कि हाँ मेरे पापा आ रहे हैं. उन्होंने कहा तो फिर पीछे घर में कौन होगा? So yes, this was like student-teacher interactions of the mid-2000s. Yes. A very, very calculated heel promo. Yes. तो खैर coming back to the point कि जब हम देखते हैं कि politicians भी जाके जब ऐलान करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, तो essentially they're cutting promos. इमरान खान ने 5 साल गवर्नमेंट में यही तो किया, he just cut promos on PMLN. That's promos when he was in the opposition. He cut promos when he's in the government. When he's in the government, that's all he did. आजकल उसका जेल भरो प्रोमो चल रहा है. जेल भरो प्रोमो चल रहा है और बड़ा अच्छा चल रहा है. Could this be a wrestling event? जेल भरो promo. हाँ, हो सकता है. Hell in a cell. Yeah. Cage match. जेल वाला भी होता था एक मैच. जेल वाले भी होते थे. I think वो prison mic. The worst thing about prison was the Imran Khans. All the PDI supporters. एक वो इंडियन prison वाला भी तो होता था. पंजाबी prison. वो ग्रेट खाली का होता. I wonder उसने रे मिस्टीरियो को उस क्यों नहीं डाला. ज़्यादा तब तो उसको उस पे थी ना, cantaloups, watermelons. This isn't just a cantaloupe. Can you please act out that famous promo? Yeah, so first some background on this. So Great Khali is a giant wrestler. He's from India. He's from the Indian part of Punjab. और उसका जो originally character था ना, वो English नहीं बोलता था. तो उसके साथ एक ट्रांसलेटर आता था, लेकिन वो एक हिंदी बोलता था विद अ पंजाबी एक्सेंट. सो वन ऑफ हिज प्रोमोज वाज, सो ही हैड अ मूव कॉल्ड द वाइज ग्रिप, जिसमें वो अगले बंदे का सर स्मैश कर रहा होता था. एंड रे मिस्टीरियो इज अ वेरी स्मॉल साइज्ड रेसलर. तो एक उसका प्रोमो है जिसमें ग्रेट खाली कहता है, उसको तरबूज पकड़ाता है उसका इंटरव्यूअर, ग्रेट खाली वो तरबूज पकड़ कहता है ये मिस्टीरियो फिर एंड देन ही स्मैशेस द तरबूज एंड सेज ये हाल करूंगा मिस्टीरियो साले का.
I think ये तो play भी करना पड़ेगा. Yes, please, please. ये मिस्ट्री है हाँ जी. मारो काली जिंदाबाद काली जिंदाबाद. Oh, brilliant stuff. This is are you not entertained by this? I actually, sorry, I'm taking over your interview. Dude, I have a question for Sir Ghazi. मुझे ये बताइए, hype man का बड़ा scene है. And is there a parallel in politics? For example, ये we just heard Great Khali's hype man. मारो साले को. और काली जिंदाबाद. Khali जिंदाबाद. And Paul Heyman, like I can't think of anybody worse. जिसका who I want to see his ass kicked than Paul Heyman, and he's always been that way. कोई है parallel in politics of hype men? I think yes, but दोनों का जो रोल है वो बहुत डिफरेंट है. रेसलिंग में जनरली हाइप मैन उन लोगों को दिए जाते हैं जिनकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती है, they're not very good at the mic. So people like Great Khali जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते, या फिर कोई ऐसे लोग जो वैसे बहुत आउटस्टैंडिंग फिजिकल स्पेसिमेंस हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट उनको स्ट्रॉन्ग साइलेंट टाइप रखना चाह रहे होते हैं, जैसा कभी कभार कोई वुमेन मैनेजर भी उनके साथ रख देंगे, और somebody who's generally good at the mic. Kane, Brock Lesnar. हाँ, Kane for example, Paul Bearer, Brock Lesnar. अभी recently he's gotten very good on the mic, but ऐसे होता है तो. लेकिन पॉलिटिक्स में हाइप मैन का रोल थोड़ा डिफरेंट होगा शायद. I'm not that much aware of politics में क्या होता है रोल. I guess हर पार्टी का एक second in command होता है who will parrot or be an alternative source of information to the main. So not second in command. This is like the mouth of Sauron kind of a situation. Yeah. So perhaps somebody who's like an information secretary who goes out and fights on your behalf. I'm thinking Fawad Chaudhary immediately comes to mind. Perhaps Firdaus Ashik. और इमरान खान का भी एक और भी है ना वो जो उसके जैसा लगता है काफी. नहीं not Asad. यार वो जो स्मिदर्स और उसका जो एक कंपैरिजन मैंने भी किया. Smithers really stands. But हाँ, you're right that in that case it is that to hype up the audience कि अच्छा अब ये इंसान आने लगा है, and sometimes they'll become the proxy of the wrestler as well. And they will end up cutting promos and building storylines. तो मेरे ख्याल से वो भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि, and again it goes to show how much the wrestling has in common with politics that we think is very real, although I don't. I think it's all a work. So one thing I want to touch upon is the social discussions that happen around politics. I mean, wrestling की obviously एक छोटी audience है. So, do you discuss wrestling with other friends of yours, or is it something that you consume privately? Because politics is something जो I think उसका quote unquote मजा ही उसमें आता है जब आप अपने दोस्तों के साथ लड़ाई कर रहे होते नहीं ये अच्छा है वो बुरा है उसने ये कहा है. Well, thankfully I have a good group of 3 to 4 friends who still watch wrestling very religiously, and we don't take it at face value. मतलब हम उसको entertainment ही consider करते हैं. So जिस तरह if you were to sit down with a friend and discuss the finale of Game of Thrones, हम भी इस तरह WrestleMania के ऊपर बात करेंगे कि जो story line में क्या हुआ. So that definitely makes it more enjoyable as opposed to just watching it privately, listening to podcasts of like 2 white men discussing it, not in Urdu. If I can add to that, I think the way we engaged with wrestling socially was to actually बचपन में खुद ही लड़के. मतलब मैं तो और मेरे भाई तो बहुत रेसलिंग किया और मतलब बहुत पेडिग्रीज मारी हैं और लास्ट राइड्स और चोक स्लैम्स ऑफ कोर्स फेवरेट. बट आई एम ग्लैड वी आर पास्ट दैट स्टेज नाउ बिकॉज़ इट्स अ डेंजरस थिंग. और बड़ी रियल एक कंसर्न था यार WWE में खास तौर पे. दे हैड टू कट आउट एडवर्टाइजमेंट्स टू से डोंट ट्राई दिस एट होम was an entire tagline because kids like who didn't know any better like myself used to do it all the time. Yeah, I used to be Kane and my cousin was Undertaker and we used to dress in red and blue. Nice. And करते होते थे entrance पूरी करते हैं mattresses बिछाए हुए हैं सोफों से चलाएंगे मार रहे हैं. Why don't we do that anymore? Sir Ghazi, मैंने सुना है आपने ट्रेनिंग भी की हुई है यहाँ पे as a wrestler, तो can you elaborate upon क्या सिखाते हैं? एक दिन मैं गया था एक कैंप में and it was grueling. It was grueling to say the least, and I think my respect for wrestling and wrestlers in general grew by leaps and bounds after I had gone through that entire 2-hour process. Because when you're standing in the ring,
the ring, it's constantly moving, it's just vibrating. तो by the end of it मुझे चक्कर आ रहे थे. और फिर उसमें drills ऐसी होती हैं, you have to roll, you have back roll करना होता है, front roll करना होता है, side roll करना होता है. It's very physically taxing. तो फिर आपने ropes run करनी है, जो आपने bumps लेने हैं, तो आपकी बस जो जिस्म है वो पहले, that's what the trainer told me, कि you have to beat yourself down and then you get the resilience. और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, you get immune to just getting beat up so much in wrestling. अच्छा जी, wrap up करते हैं मेरा ख्याल है. Rap. Any parting thoughts? Any last imitations that you want to do? I think मेरे end से कुछ यही होगा कि wrestling को fake ना कहा करें. It's like any other entertainment. It's scripted and it's good entertainment, I feel, because there is no type of entertainment जो हम एक, मेरे ख्याल से it's a different sort of medium of entertainment, because it's theater but it's also produced like television. It's also episodic but it's also being done live with characters that don't really change across time period. And अगर जॉन सीना है तो वो जॉन सीना ही है. It's not like वो एक एपिसोड में कोई और बन के आ रहा है. तो the actors and the characters are almost the same. तो I remember मैं एक दफ़ा एक थिएटर वर्कशॉप में गया था, तो मैंने ये सवाल पूछा था कि हम रेसलिंग को कैसे कैटेगराइज करेंगे, डज इट फॉल अंडर थिएटर और टीवी और मूवी. तो वो बंदा थोड़ा परेशान हो गया था कि ये क्या वाकई मुझे खुद नहीं समझ आ रही, बिकॉज यू नो इट्स शॉट इन फ्रंट ऑफ अ लाइव क्राउड, इट्स डन लाइव, देयर आर नो रीटेक्स, बट देन इट्स प्रेजेंटेड ऑन टेलीविजन एंड देन है वो एपिसोडिक, और उसकी काफ़ी चीज़ें सिनेमैटिक भी होती हैं. तो इट्स लाइक एन अमैलगमेशन ऑफ एवरीथिंग. आई मीन, deserves respect. That's what I'm saying. In the famous words of one of our school teachers again, ओए तुम scripted कह लो, fake कह लो, चीज़ तो एक ही है. हाँ, for a simpleton ठीक है, but that's what I'm trying to say कि नहीं. I guess I am a simpleton. लेकिन मैं तुमसे. But I'm not the only one. ठीक है. Loverboy 68. आप क्या ऑडियंस को recommendations देंगे in their newfound जी, I think wrestling, I have a lot of iconic memories associated with wrestling. Like I remember वो एक buried live match था between the Kane and the Undertaker, and वो जो emotional engagement with wrestling होती थी, I don't think it changes because it's scripted. I think if anything, I'm glad it's scripted, because I think कुछ चीज़ें जो है वो अब they won't stand the test of time. But अगर आपने wrestling enjoy करनी है तो मैं आपको suggest करूँगा आप YouTube की random clips से पहले देखें. It will get you into a good intro, a short TikTok style 10-second attention span intro, and then when you're hooked, you might want to watch the longer events. और आपने मुझे YouTube से याद है आज ही बताया कि WWE is the 6th most subscribed channel. 6th or the 8th most subscribed channel in the world. So audience तो काफी है. As a parting anecdote, I think you should describe one of our core memories of wrestling. जब हमने एक शर्त लगाई थी एक wrestling match पे. जी, मेरे साथ हम तीनों थे. हाँ, हम तीनों थे. हम पैसे तो होते नहीं थे, तो हॉट एंड स्पाइसी पहुंच गए थे और क्लास बंक करके गए थे हम बिल्कुल. और हमने कहा यार अब फ्राइज की शर्त लगाई हमने. मैच हो रहा था कर्ट एंगल वर्सेस जेफ हार्डी, एंड यूजुअली यू नो इट गोज ऑन फॉर अ व्हाइल एंड देन यू हैव अ विनर इमर्ज, एंड और आधे बड़ा इवनली लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड था. आधे लोगों ने कहा नहीं जी कर्ट एंगल जीते, आधे ने कहा जेफ हार्डी जीते. वो मैच चलता गया भाई, चलता गया. खाना खत्म हो गया आधा पौना घंटा और चीज फ्राइज लाई जी और लाए. स्टेक्स भी बढ़ रहे हैं क्योंकि अब खाने का ऑर्डर भी बढ़ गया. एंड पे वो मैच अनलाइक एनी अदर मैच आई एवर सीन ended in a draw. Not in a disqualification type, no result. It's a draw. Like the referee said, it's a draw. There is no winner. Never seen that happen. And what are the odds कि जब शर्त लगाई थी तभी ऐसा हो. फिर पैसे किसको देने पड़े थे? I think हमने split किया था. That was the. और हमने, I think you googled it when you went home. Who won the match against, और हर जगह ये लिखा हुआ था कि क्या विंस रूसो की बुकिंग थी. वो probably the worst garbage booker ever on the face of this earth. Kind of like General Bajwa.
Cancelled. कर दें कोई By the way, I have watched Jeff Hardy and Matt Hardy live. I have went to a Seriously? WWE taping. हाँ मुझे याद है you went Friday night SmackDown. It was the Monday night SmackDown, the day after WrestleMania. Oh. And उसमें the only people I recognized were Jeff and Matt Hardy in a tag team match, and then Shane O'Mac आया था. How did you like the experience of going to So an I actual have taping? been to a basketball match in the US. I have been to a soccer match in the US, and I guess by extension football matches. मैंने 2 Premier League के भी attend किए मैं. When you say football, you mean American football or soccer? No, just like We're in the US, so we'll just use their language. अमेरिका में मैंने soccer match attend किया और इंग्लैंड में मैंने football match attend किया. वह बात है की. ठीक. And I would say by far the crowd at the wrestling event was the best I've ever been to at any quote-unquote sporting event across all of these. Everyone knew what they had to do right on cue. Audience-wise कि ये I don't know if you want to call them player आएगा तो ये chant होगी, सारे इकट्ठे करेंगे, इस point पे boo करेंगे, इस point पे cheer करेंगे. And for people who presumably know that this is fake, they put in a hell of a lot of enthusiasm in being united in their condemnation or cheering of someone. So it's a part that they're a part of the crew rather than a part of the audience. They're part of the kayfabe. Yeah. And I sensed a certain amount of like brotherhood amongst them as well. कि you know people who sat next to each other didn't know each other, लेकिन उनकी गपशप आपस में चल रही है. There's lots of inter-audience interaction happening. So 10 out of 10 would do it again. Probably with a better card though. सर हमें ये भी बताएं आपने एक रेसलिंग इवेंट पाकिस्तान में भी अटेंड किया हुआ है. किया हुआ है और मैंने सर गाजी की इन्विटेशन किया है. That was Tell a us about it. great event. हाँ और मैंने अपनी क्लास को फील्ड ट्रिप पे लेके गया था. Wow. तो आप एक्सप्लेन करें आपका. Well, we have a local wrestling promotion as well, जिसका नाम Wrestling Revolution Global है. और वो अक्सर औकात यहाँ पर इवेंट्स करवाते हैं. बड़े टैलेंटेड उनके रेसलर्स हैं, बड़े अच्छे रेसलर्स हैं. और उन्हीं का एक बहुत बड़ा मैसिव इवेंट हुआ था जहाँ हमने लास्ट वीकेंड फुटबॉल भी खेली थी. बाय द वे उधर ही डूंगी ग्राउंड जो है वहाँ पर कदाफी स्टेडियम. प्याला ग्राउंड सॉरी डूंगी प्याला. चलो प्याला भी डूंगा ही होता था. तो तूने डूंगी अपनी. तो वहाँ पर आपको भी इनवाइट किया, आपके स्टूडेंट्स को भी इनवाइट किया और बड़ा मज़े का था क्योंकि इट वाज वेरी लोकल सॉर्ट ऑफ एन इवेंट. एंड वहाँ पे ये था कि द ऑडियंस उसमें सिर्फ हम लोग ही थे जो प्रॉपरली इन्वेस्टेड थे. बाकी सब लोग तो ऐसे ही बस देख रहे थे. पहले रैंडमली लोग आए थे जी कुश्ती हो रही है तो देखते. वो खान बाबा को देखने आए थे. The biggest fake strong man on the face of this earth, जिसके लिए उन्होंने पता नहीं कितने 4 लाख रुपए उसको दिए थे. लेकिन उनका सेटअप वगैरह काफी elaborate था and it was basically mimicking what I would have expected in the WWE. Even the localized promos as you would call it. तू मेरे पाँव के नीचे नहीं आता, तू बिच्छू है, तू सांप है, कॉकरोच हो तुम. हाँ कॉकरोच. मजे की चीज थी. एक चीज वैसे जिस पे हमने बात नहीं की वो है कमेंट्री इन रेसलिंग. आई थिंक watch out. yeah so I think Jim Ross for example for us was the defining voice of WWE. Defining मैं 20 साल से देख रहा हूँ. I always think वही 2 commentators हैं. I don't know if they've changed. He now comments at Japan. He was He's on fired. AEW now. AEW चला गया. अब तो टीम चेंज हो गई. अब माइकल कोल होता है. Well, Raw has a different commentary team. एक JR है. हाँ? JR is also not in WWE. I mean, he makes appearances, but he's not a part of the commentary team. It's more younger now. They all sound the same to me, if I'm honest. No, sir. Jim Ross was a legend. I mean, he was so engaged. JR is Jim Ross. Jerry the King Lawler को तुम वो Jerry the King Lawler था. हाँ, जिसको तुम confuse. And yet there is Jim Ross. His initials are JR, but he's not JR. हाँ. वो JR ही है. उसको वो JR ही कहते हैं. Jim Ross is JR. And then the King. Just call him the King. The King Lawler. Right. जिसका एंडी कॉफमैन के साथ भी मैच हुआ. वो I think for me if there's one reason why I thought wrestling was not fake was also because of his commentary. He was so my God the carnage. जिस तरह वो emotionally involved हो गया Triple H को गाली दे. You son of a bitch Triple H.
I think for me that was the most convincing bit about the fact that the wrestling might actually not be scripted. Do commentators know about the script? Yes, when in terms of when Vince used to book, तो commentators के पास script होता है, but it varies from promotion to promotion. इस time में Triple H has given more liberty, creative freedom, तो आप कर सकते हैं, you can go outside of the script, but I'm not talking about commentators having a script. I'm saying, do commentators know the results of the match beforehand? For some they do. Sometimes purposefully नहीं बताया जाता ताकि वो उस वक्त emote करके react करे. It's like that chest buster scene from Aliens where nobody knew कि इसमें से कुछ निकलेगा, and the camera actually got their actual emotions in that scene. So it's something like that. जिस तरह अभी हुआ था, I remember Royal Rumble हुई थी, so Pat McAfee जो एक NFL player है, who also has his own podcast, he came back to commentate. Nobody knew that he was coming back. So जो commentators थे वहाँ पे, उनका reaction was completely not scripted at all when he came. तो इस तरह होता है कभी. ठीक है, चलिए. मैंने 20 मिनट पहले कहा था हम रैप अप करते हैं, और 20 मिनट लगे हमें रैप अप करने के. मुझे पिशी भी आ गई है. On that fine note, let us end. All right. Thank you, sirs. Thank you. छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दें. Absolutely not. मुझे अंडे वाला बर्गर एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर. जी गौरी आया फिर.